Hello viewers, our today's topic is accounting principles. My name is Shayan Ahmed Ansari. So the first principle in the list of accounting principles is accounting period principle. This principle states that a business should report the results of its operations over a standard period of time, typically monthly, quarterly or annually, in order to make useful comparisons. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है हमें कहता है कि जो भी अकाउंटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, वो उस पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में हो जानी चाहिए या रिपोर्ट हो जानी चाहिए जिस पीरियड के वो अकाउंट्स बने. फॉर एग्जांपल, XYZ company closed its reporting period on monthly basis. It means that XYZ company compare its data on monthly basis with respect to prior month या period. Second principle is the accrual principle. The accrual principle हमें कहता है कि accounting transactions are recorded in the period when it is earned rather than when cash was received from the customers. This also holds true for expenses as they are recorded when they were incurred rather than when they were paid. This is one of the most important principles, or can say a key principle of accounting. Let's see the example. XYZ company used electricity in March 2020, whose bill we received in April 2020. According to accrual principle, company needs to record the expense in the same period when it's occurred, such that in March 2020. Consistency principle. Once a business adopts an accounting method or policy, that method or policy should continue to be used in similar situations unless there are reasonable reasons. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी जो है कोई प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है, किसी भी मेथड को अडॉप्ट करती है, तो वो उसको उस प्रिंसिपल को वैसे ही यूज़ करती रहेगी. फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, XYZ company mentioned that any purchase which is greater than 5,000 and have useful life of more than 1 year should be capitalized. Then company has to follow this. अगर कंपनी की पॉलिसी है कि 5,000 रुपये से ऊपर की कोई भी चीज़ होगी तो उसको कैपिटलाइज करेगी, तो कंपनी जो है वो पूरे पीरियड में इस चीज़ को फॉलो करेगी. XYZ company uses FIFO method, so he should keep it using it at the sales. अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो FIFO मेथड यूज़ करेगी, तो वो कंपनी जो है फिर थ्रू आउट FIFO मेथड ही यूज़ करेगी. ऐसा नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन में FIFO कर ले, किसी में LIFO कर ले. Cost principle. A business should record its fixed, short and long-term assets at original cost and not fair value at the time of acquisition minus accumulated depreciation. Or cost principle states that an asset should always be recorded at original buying price or cost and not the perceived value, and therefore any changes in the market value of the asset should not affect how they are represented in the balance sheet. XYZ company purchases a machine of rupees 500,000 and very next day due to any reason in price of this machine goes up by 100,000 rupees. In this situation, the machine will be recorded with 500,000. 5 लाख की चीज़ है, डजेंट मैटर कि वो अगले साल या अगले दिन कितने की हो गई. आपने जितने की ली है, जितना आपने पे किया, आप उतने से ही रिकॉर्ड करेंगे. उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू होगी, परसीव वैल्यू, उससे रिकॉर्ड नहीं होगा. Business entity principle. The business entity concept states that the transaction associated with the business must be separately recorded from those of its owners or other business. This is also known as economic entity principle. XYZ company is owned by Mr. A, and Mr. A bought a luxurious car for his own use. This car, since is for personal use, not for the business, so it will not be recorded in XYZ company. एक और example है, Mr. A won a lottery of rupees 1 million which was on his own name. The same won't be recorded in XYZ company. Full disclosure principle. All non-standard information or notes are disclosed in the financial statements to allow a reference point. For example, company X purchased a piece of property and are now the current owners.
A passing pedestrian had a terrible fall on the property and got badly injured. This pedestrian is now suing Company X for a significant amount of money for negligence. The pedestrian is likely to win the lawsuit in the following year. Under the full disclosure principle, Company X should disclose the anticipated losses from the lawsuit in the footnotes of the financial statement, even though the loss has not been confirmed or finalized. Going concern principle stipulates that a business is expected to continue indefinitely and assets are not intended to be sold immediately or liquidated. इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो जो साल चल रहा है, इस साल तो चलेगा ही चलेगा, इससे अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा. बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए किया गया है, या किया जा रहा है. और सेकेंडली, जो बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीदेगा, वो बिजनेस को रन करने के लिए खरीदेगा. For example, a company manufactures a chemical known as Chemical X. Suddenly, the government imposes a restriction on the manufacturer, import, export, marketing, and sale of this chemical in the country. If Chemical X is the only product of that company manufactures, the company will no longer be a going concern. एक कंपनी है कि जो कि Chemical X बनाती है, और गवर्नमेंट ने उस Chemical X की import, export, sale, हर चीज़ पे, मार्केटिंग पे, सब पे जो है वो बैन कर दिया है. तो इस सिचुएशन में जो कंपनी X है, he will suffer the issue of going concern. वो इसलिए क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स ऑफ सेल्स ही नहीं है, कोई सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मैचिंग प्रिंसिपल. बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है. व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड. जिस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उस पीरियड में रिकॉर्ड किए जाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से XYZ company buys a machine for rupees 100,000 in 2020. This machine has a useful life of 10 years. This means that the machine will produce products for at least 10 years into the future. 10 साल की लाइफ है, 10 साल की खरीदी गई है. इसका मतलब है कि ये मशीन 10 साल तक काम करती रहेगी और 10 साल तक आपको प्रॉफिट देती रहेगी. According to the matching principle, the machine cost should be matched with the revenues it creates. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक साल के अरसे में इस मशीन से जितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है, उसकी कॉस्ट भी उतनी ही आनी चाहिए, उस एक साल के रेवेन्यू और उस मशीन की एक साल की कॉस्ट. दस द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स 10-year यूजफुल लाइफ इंस्टेड ऑफ बीइंग फुली एक्सपेंस इन 2020. यही वजह है कि जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो ओवर द ईयर ऑफ लाइफ हम स्प्रेड कर देते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल, मटीरियलिटी प्रिंसिपल. Errors or omissions of accounting procedure that which involves immaterial or small amounts may not need attention or correction as they would not alter business decision. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसी गलती है, मिस्टेक है कि जिसकी वजह से कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. इसमें एग्जाम्पल में भी यही बात बताई गई है. मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल. Business transactions that are recognized as monetary currency are only recorded in a business accounting records. For example, consider you work in a company where twice a year the CEO of the company, who is also a motivational speaker, gives a highly valued lecture to all employees about morale and the motivation in your work environment. This lecture cannot be recorded in your business financial accounts because it cannot be measured in terms of money. Okay. Next principle. Reliability principle. Only those transactions that have supporting documentation like a receipt or an accurate and unbiased should be recorded. For example, the reliable evidence for financial transactions or event that records in financial statements is including original documents, invoices, contracts, receipt, bank statement, information that generates from the third party or information that prepared by the auditor. This is how reliable evidence from auditor's perspective. Revenue recognition principle. Revenue is only recognized only when it is earned. जब कमा लेंगे तभी recognize करेंगे, तभी उसको consider करेंगे. यही हमने एग्जाम्पल में भी लिखा है कि रेवेन्यू सिर्फ तभी रिकॉर्ड होगा कि जब हम उसे अर्न कर लेंगे, जब हम उसे कमा लेंगे. XYZ company sells a product to Mr. A, 55,000 रुपए की बेची on 15th March 2020, but till 31st March the product is not delivered to Mr. A. 31 मार्च तक हमने उसको डिलीवर नहीं की एंड इट्स स्टिल इन द premises of XYZ company और है भी XYZ company के पास. In this case, XYZ company will not record the sales as the goods is not yet delivered and the risk and reward is not yet transferred. Even though Mr. A has made the payment. हालांकि Mr. A ने पेमेंट भी कर दी है, लेकिन तब तक रिकॉर्ड रेवेन्यू नहीं होगा जब तक कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, जब तक कि टाइटल ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा.
So that's it. Thank you for watching the video.